Okay. So, class number 35, I welcome you to class number 35, Public Administration Part 2. Last time हमने पढ़ा था कि what are the challenges, why ethics is required in public administration. अब हम उस ethical guidance के sources के बारे में बात करेंगे. Okay. कौन कौन से sources हैं जिनके थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिविल सर्वेंट्स जो कि आप बनने वाले हो वो आप कहाँ से डिराइव करोगे. ओके, एथिक्स तो जरूरी है, बट फ्रॉम व्हाट सोर्स you are going to derive this ethics. So let us talk about these sources. So different sources can be laws, rules, regulations and your own conscience. ठीक है, आपके laws जो हैं which are already in place, the rules which are already in place, the regulations which are enforced and your conscience, ये सारे मिलके आपको एक ethical guidance provide करते हैं. अब इन सारे these all four sources, they are interconnected to each other and at the same time they are different from each other. इनका जो बेसिक नेचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन somehow they are also interconnected to each other. Okay, so वो हम देखेंगे how they are interconnected, what makes them click together. Okay, what makes them click together and how different they are. Why there is a difference in all these four सोर्सेस. तो आज हम अभी इस क्लास में किस चीज की बात करेंगे, लॉज की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे, रेगुलेशन की बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास में कॉन्शियंस एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस दोनों की बात करेंगे. एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस. अगर आपके पास कॉन्शियंस है तो सिंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू मीट विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे and you are going to face thousands of new situations, so you are going to have crisis of conscience that you have to deal with. Okay, so what exactly is a rule? So a rule is a norm for behavior. In simple definition, if I'll have to explain to you what is a rule, so it is a norm for your behavior. किस तरीके से बिहेव करना है उसका एक नॉर्म है. इट इज सेट अप इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में रूल्स होता है, पेनल्टी रूल, कॉर्नर किक रूल, आपने फुटबॉल में सुना है, और कहाँ कहाँ होता है, क्रिकेट में होता है 30 मीटर रूल्स, है ना, पावर प्ले रूल्स सुना है. so it's a norm for behavior that if a certain rule is in place or it is enforced, then the person who is within the system, he is going to behave in a certain manner by following the norms which are the rules. Okay, law on the other hand is created by the government to govern action and punish those disobeying the same. यहां पर रूल और लॉ में एक चीज का डिफरेंस आपने देखा है, पनिश. द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, okay, the extent of punishment from breaking a rule and breaking a law is different, and that is what makes these two sources different. रूल जो है और आपका लॉ है, उसका जो punitive consequences है for breaking them are totally different. जब आप रूल ब्रेक करते हो यू माइट गेट अ स्मॉल पेनल्टी, मे बी आपको एक मॉनेटरी पेनल्टी, ओके, मॉनेटरी पेनल्टी आप पे लगा. ठीक है, जैसे होता है ना स्लो ओवर रेट के लिए मैच फीस का 75% लगा. यू मे और मे नॉट गिव दैट. ओके, सपोज, ऑलराइट, क्रिकेट में एमसीजी लॉ बनाता है ना, अनलाइक इन अदर स्पोर्ट्स. ओके, ठीक है, सपोज आपने ओके रूल फॉलो नहीं किया, सो पनिशमेंट इज वॉलेंट्री. यू कैन चूज नॉट टू, okay, you can choose not to pay the fine or you can not choose to undergo the punishment, and that way you can get out of the system. Okay, you can say that I'll not be playing, okay, I will not be playing cricket from now on, and but I'll not, okay, I'm not going to fulfill this punishment because I think this is unjust. But when it comes to law, you are a permanent member
of the system with no way out. You कैन नॉट से दैट ठीक है मैंने मर्डर कर दिया, मेरे पे लाइफ टर्म, आई हैव गॉट अ लाइफ टर्म, I don't want to undergo that. I am opting out of this system called society, because you are a permanent member of the society and there is no way out to opt out of this system. Whereas जहां पर rule enforce होता है, wherever rule is enforced, you can opt out. Okay, you can opt out of the system and say that, okay, I don't want to be part of this organization, I am not going to accept the punishment. But here when it comes to law, you have to accept the punishment if you have violated it. तो यहां पर आपने देखा क्या डिफरेंस है दोनों में, रूल एंड लॉ में, द डिग्री ऑफ enforceability, the degree of enforceability, the laws enforceability is absolute, because by default you are a permanent member of the society where law is enforced. Whereas rule ka jo enforceability hai, it depends, okay, it depends on the person who is enforcing, it depends on the person on which the rule is enforced. ठीक है, severity भी हो सकता है, कह सकते हो, in a way, okay, in a way you can say. I hope this is clear to you. Now what is a regulation? So regulation is an official rule or order or the act of controlling something. Act of controlling. आरबीआई क्या है, सेबी क्या है, सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दे आर रेगुलेटरी बॉडीज. एग्जाम देते हो ना नबार्ड का, आरबीआई का, सेबी का, क्या बोलते हो, रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, ओके, गिव द एग्जाम ऑफ रेगुलेटरी बॉडी. तो रेगुलेटरी बॉडी क्या करता है, कंट्रोल करता है सर्टेन डोमेन्स, ओके, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, यस. अब लॉज पे आ जाओ, ओके, इट माइट बी अ बिट ग्रेनी बट आई होप आपको दिख रहा है. आई हैड टू स्कैन इट विथ माई टैबलेट. मेरा फोन क्योंकि लॉक हो गया है, मेरे को याद ही नहीं था कि फोन को लॉक नहीं करना था आज, बिकॉज ओके वो मेरा 10 मिनट वाला खत्म हो गया, देन इट गॉट लॉक्ड. एनीवेज, अगर आपको दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, आई विल जस्ट डिक्टेट इट. सो लॉज, ओके, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर लॉज. सो लॉज इन एथिक्स, लॉ हैज अ मॉरल कॉनोटेशन. जब हम एथिक्स की बात करते हैं, चलो मतलब आप जब GS4 के पेपर के थ्रू पढ़ रहे हो लॉ, नॉट GS2 पॉलिटी, लॉ इन द एथिकल फॉर्म, इट हैज अ मॉरल कॉनोटेशन. अब एक फादर अक्विनास थे, आपको याद है हमने डिस्कस किया था इनके बारे में मॉरल थिंकर्स में. सो फादर अक्विनास डिफाइंड लॉ एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन for the common good, promulgated by who has care for the community. लॉ अकॉर्डिंग टू फादर अक्विनास एक ऑर्डिनेंस है ऑफ रीजन. यहां पर क्या है, एक रीजनेबल थिंग है. लॉ क्या है, लॉ इज अ रीजनेबल थिंग फॉर कॉमन गुड. कॉमन गुड किसका, सोसाइटी का. प्रोम्युगेटेड बाय whom, किसने बनाया है, someone who has care for the community. तो यहां पर एक पॉजिटिव कोनोटेशन दे रहे हैं फादर अक्विनास, दैट ही इज सेइंग दैट लॉ वही बनाएगा जिसको केयर है कम्युनिटी की, एंड लॉज आर फॉर्म फॉर द कॉमन गुड. एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस. आप अगर देखो तो वी हैव स्ट्रिंजेंट 498A ले लो, डोमेस्टिक डाउरी, डाउरी लाइक डाउरी, एंटी डाउरी लॉ है ये. So is it not for the common good? 50% of the population is women. 50% of the population is women, और आप because of a system which was out of date, उसके वजह से 50% of the population was suffering. तो common good में आ गया ये, because this law is catering to more than half of your population, okay, and not only women. जो 498A है उससे क्या होता है, जो फादर, मदर, ब्रदर ऑफ विमेन,
they also are at peace. They also are at peace that okay, if my sister is going to or my daughter is going to certain household, okay, if I'm marrying my daughter, I am at peace that there is a law which is going to take care. तो ये कॉमन गुड हुआ कि नहीं? किसने प्रोमिलगेट किया? बाय अ सिस्टम और बाय अ गवर्नमेंट विच टेक्स केयर ऑफ विमेन, विच हैज अ केयर फॉर विमेन, है ना? एंड इट इज an ordinance of reason. Why? Because is not compatible dowry is not compatible with the present system. जो हमारा सेक्युलर रिपब्लिक है, जो हमारा एक मॉडर्न रिपब्लिक है, इट डाउरी जैसी चीजें इज नॉट कंपैटिबल, सो इट इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन. कोई भी लॉ उठा लो, टेक एनी लॉ, गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी लॉ एंड आई कैन फिट दैट इन दिस डेफिनेशन. ओके, any law's example can be fitted in this definition. Sedition, is it not ordinance of reason? Why? Because preamble में क्या लिखा है? Unity, integrity, है ना? उसको बचाना है. That's why those who have made these law, they have made it for the unity and integrity, and it is for common good. किसके? इंडिया के लिए. That India, when it is united, then only we can grow. And it is promulgated by whom? Who has care for the community. इस तरीके से रीजनेबल वे में, ओके, इस तरीके से रीजनेबल वे में आप कोई भी लॉ को इस डेफिनेशन के टेम्पलेट यूज करके लगा सकते हो. ठीक है. I have seen a lot of questions in at least कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक्स. एक लुकमान आईएएस का मैं मॉक टेस्ट देख रहा था, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे लॉस से रिलेटेड. सो आई एम एस्टिमेटिंग दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके भी आंसर राइटिंग कर लेंगे. जस्ट रिमाइंड मी वंस, ओके, व्हेन वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग, की लॉ का ज्यादा करना. Law induces people to act or restrains them from acting and imposes an obligation. यहाँ ऑब्लिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, ऑब्लिगेशन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. वाई? बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था दैट यू आर अ डिफॉल्ट मेंबर, यू आर अ डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, आप सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते हो. ये मेंबरशिप परमानेंट है एंड नॉन ट्रांसफरेबल है. द मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी is permanent and it is non-transferable, and you cannot give up the membership of society, of being a member of society. ठीक है. So आप अगर पैदा होते हो इंडिया में, unless and until you have not left this country, you have to participate in the society, and degree of participation might matter, degree of participation might differ. ठीक है, कोई बहुत ज्यादा participate करता है, कोई कम पार्टिसिपेट करता है, बट यू आर स्टिल अ मेंबर. योर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन इन दिस सोसाइटी माइट डिफर, बट यू स्टे अ मेंबर. और अगर आपने कोई लॉ वायलेट किया तो यू कैन नॉट से दैट आई डोंट केयर अबाउट दिस सोसाइटी, बिकॉज द लॉज एंड इट्स पनिशमेंट्स फॉर वायलेशन will apply to you regardless of whether you want, okay, of whether you want to be part of society or not. Law must conform to human nature. Law जो है, it must conform to human nature. That is very important. If it is against human nature, अगर law है, if it is against human nature, people are going to revolt. People are going to revolt. Then law should be just. Law should be distributing favors and burden equally. It cannot be skewed. Okay, it cannot be skewed and distributing only burdens, and it cannot be skewed and distributing only favors. इसीलिए आप देखते हो there is a lot of talk. अभी मैंने एग्जांपल दिया 498A का. There is a lot of talk about 498A that it is giving a lot of burden to the to the husband, and the husband
साइड ऑफ फैमिली, हस्बैंड और हस्बैंड के साइड जो फैमिली है उस पे बहुत ज्यादा बर्डन है. A lot of false cases are there. A lot of false cases are there, which is making it unjust, which is making it unjust. Hence, a lot of men, they are rising against this. They are raising their voice against this. ऐसा भी होता है. आपने देखा है कि राजस्थान में SC ST एक्ट, SC ST atrocity act, it has a very large, okay, approximately 70-80% नन कन्विक्शन रेट. मतलब वहां पर कन्विक्शन हो ही नहीं रहा है SC ST एक्ट में. Okay, there are a lot of false cases. There are a lot of false cases to settle vendettas, personal vendettas. So यहाँ पर क्या है, that it is burdening a certain, okay, burdening a certain group of people. This case, SC ST atrocity case, it is distributing favors to a particular group of people. Okay, they are getting a lot of incentives. अभी एक कल ट्विटर पे there was a circulation of a, okay, of a document जहां पर दिखा रहा था that there was this one guy who made 6.5 lakh rupees just by filing 15 to 20 SC ST cases. Okay, this guy, and he had made 6.5 lakh rupees in 1 year alone just by filing 15 to 20 cases. तो ये क्या हो रहा है, that a lot of people were saying yesterday and they were asking the government that is it just, is it distributing favors and burden equally? You are skewing the favors in for one community and you are skewing the burdens for one community, hence it becomes unjust. इसीलिए people are what, people are revolting, people are raising their voice that okay, this is not done, this is not done. अब अगर आप देखोगे 498A and SC ST atrocity act, it is for the common good. That yes, a major chunk of India's population, it is Dalit, it is OBC. Yes, hence there needs to be a law, okay, a law which is protecting these people. 50% of the population is women, so there needs to be a law, okay, there needs to be a law which is protecting and protecting the common good. But problem कहाँ आ रही है, due to its misuse, it is not distributing the favors and burdens equally. It is burdening one section of the population and it is unduly favoring one section of the population. And that's why people are, going against this, that this is not conforming to human nature. Okay, this is against human nature, this is against Indian traditions. Why? Because this is breaking family, this is breaking Indian family structure. So what happens, okay, off the cuff remark hai, don't take it otherwise. What happens is that suppose there is a fight between the spouses, the man and the wife, and the wife, she in the spur of moment she goes to the advocate. Okay, and the advocate, he is greedy and he wants a good chunk of the fees, legal fees. So what he says that कि नहीं आपको छोड़ना नहीं चाहिए, all right, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, you should burden your husband with these 5-6 laws. Okay, these 5-6 laws. Okay, so what is happening is that it is not conforming to human nature by attacking the Indian family structure. जो marriage बच सकता था, जो marriage बच सकता था, it is being driven to the point of no return, to the point of no return by the legal system. Okay, by the legal system it is being driven to the point of no return. अब वहां पर है कि there becomes a gap which is very wide between the husband and the wife due to the legal system. तो वही बोला जा रहा है that this is against human nature and this is not dispensing favors and burden equally. Okay, this is not dispensing favors and burden equally. Yes, very based,
Okay, very based. शैल वी मैरी, शुड गाइज मैरी? देखो, एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप क्लास करोगे मेरे, तो आई एम द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ मैरिज। एंड एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में मैंने एक थ्योरी ऑफ नीड्स बताया था, अगर रंजन को पता है, वीएस को पता है, या हर्षित को पता है। एंड आई हैव सेड दैट विदाउट मैरिज this society is going to collapse. Okay, this society is going to collapse. Okay, तो वो different thing है, we should not digress, we should stick to this ethics. Okay, anyways, then law must be physically and morally possible to obey. Law जो है, it must be physically and morally possible to obey. अगर सपोज बोला जा रहा है दैट कोई ऐसा लॉ है, सपोज कि इट इज आस्किंग यू, आई गिव यू एन एग्जांपल, सॉल्ट लॉ जो है, सॉल्ट सत्याग्रह में था ना, सॉल्ट लॉ, दैट यू विल नॉट मेक सॉल्ट, एंड सॉल्ट वाज व्हाट, अ जनरल आइटम, salt was a general item of use. Okay, salt was a general item of use, so it was morally incorrect, it was ethically wrong, that you are basically stopping millions and millions of Indians from using a basic necessity, and that was salt. Salt तो सभी यूज करते हैं, है ना? So it was physically and morally wrong. Okay, it was physically and morally wrong. Now let us talk about the divisions of law. So natural law, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ के भी दो पार्ट हो गए, एक होता है डिवाइन लॉ और एक हो गया ह्यूमन लॉ। सो नेचुरल लॉ क्या है? इट डेवलप विद टाइम और विद कमिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल लॉ कहता क्या है? दैट ह्यूमन बीइंग्स दे हैव अ नेचुरल सेंस ऑफ रीजन, human beings have natural sense of reason despite the level of civilization they are in, just by being virtue of humans, just by being human, आप certain, you are capable of deciding on certain matters, and that becomes your natural law. Okay, and what is that matter? It is whether a certain thing is right or wrong. You are capable of it despite the level of your civilization, or despite level of your literacy. You are capable of reason just by being a human being. Okay, and that is natural law. And all the other laws, all the other laws, they are rooted in natural law, they are rooted in natural law. Okay, सो पॉजिटिव लॉ दो टाइप का हो गया, एक डिवाइन लॉ हो गया, एक ह्यूमन लॉ हो गया। ह्यूमन लॉ में आपका जो लीगल लॉज होता है या जो सिविल लॉ होता है वो आ जाता है। डिवाइन लॉ में ऐसी चीजें आ जाती हैं विच इज सेड टू बी सैंक्शनड बाय गॉड हिमसेल्फ। दिस इज अ वेरी वेस्टर्न कंसेप्ट। गॉड मतलब होता है ना, गॉड, GOD, विद द कैपिटल G। तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, आपको पता है, इट इज बेस्ड ऑन द अब्राहमिक, ओके, सिविलाइजेशन। तो वहां पर बोला जाता है गॉड जो है, जैसे आप देखोगे इस्लाम में बोला जाता है ना कि अल्लाह, अल्लाह इज गॉड। ओके, एंड क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है? गॉड। तो बोथ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दे आर अब्राहमिक फेथ। तो वहां पर क्या बोला जाता है? दैट गॉड, ओके, गॉड जो है, ओके, गॉड जो है सिंगल एंटिटी, ही हैज सैंक्शनड, द सिंगल एंटिटी हैज सैंक्शनड सर्टेन लॉज। अब उसमें डिवाइन लॉ में क्या आ जाता है? अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का याद है, डिवाइन राइट्स थ्योरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का याद है, डिवाइन राइट्स थ्योरी, दैट गॉड हैज सैंक्शनड लुई द 16th, लुई द 17th एंड लुई द 18th। यस, याद है आपको? सो गॉड हैज सैंक्शनड हिम टू रूल ऑन दिस अर्थ। गॉड हैज ऑर्डेन्ड चार्ल्स द थर्ड and his mother Elizabeth II and his grandfather to rule. Okay, what was his grandfather's name? I think George the Sixth, right? So it is God who has said,
Okay, it is God who has said that you should rule on this earth over my people. You are my representative here. Okay, ह्यूमन लॉ, उसी उसमें ह्यूमन लॉ में आपका सिविल लॉ आ जाएगा, जो बेसिक लॉ ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं. ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. I think divine law is clear, something which has the sanction of God himself. और यहाँ पर गॉड हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अब्राहमिक फेथ क्या क्या हो जाता है? क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और योर इस्लाम. तीन अब्राहमिक फेथ हो गए. एंड उन वहां जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, ओके, वहां जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है. दैट एंटिटी हैज सैंक्शनड सर्टेन लॉज एंड दैट इज कॉल्ड द डिवाइन लॉ. यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर याद करो तो वी हैड रेड अबाउट डिवाइन राइट्स थ्योरी. ओके, डिवाइन राइट्स थ्योरी, जहां पर बोला गया था दैट गॉड हैज ऑर्डेन्ड लुई दी 18th और लुई दी 16th, लुई दी 17th टू रूल ऑन द फ्रेंच पीपल. गॉड हैज ऑर्डेन्ड, यस, Judeo Christian values, exactly correct. Okay, so natural law, Father Aquinas, again, he has described natural law as participation of the eternal law in the rational creature. Rational creature किसको बोला है? Human being को बोला है. That all the human beings, despite their civilizational progress, despite their education, despite their literacy, are capable beings. Capable of what? Capable of being rational. Okay, अगर आप जाओगे सपोज साउथ अमेरिका में, सपोज जस्ट थिंक दैट यू आर अ 15th century, you are a 15th century Spanish conquistador. Okay, you are a Spanish invader and you went to America, the new world, and वहां पर आपने कुछ लोगों से आप मिले, कभी भी आपका कांटेक्ट नहीं हुआ था, बट बोथ ऑफ यू आर ह्यूमन बीइंग्स. both of you are human beings. So certain behavior was common in you as a Spanish, as a someone who is from the Spanish civilization or the advanced European civilization, and someone from the Incan civilization, or someone from the Mayan civilization, or someone from the Aztec civilization, जिसका लेवल माइट बी यूरोप जितना नहीं है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो यूरोप जैसा नहीं है, बट वंस यू मेट दोज पीपल, यू वेर एबल टू कम टू सर्टेन रैशनल अंडरस्टैंडिंग्स दैट ओके, ये गिफ्ट्स होता है जो मैं लेके आया हूं. जैसे अकबर था, अकबर के कोर्ट में आया था ना, जो फादर मॉन्सेराट एंड फादर एक्वा वीवा. देन ये आपके जहांगीर के कोर्ट में आया था. आई थिंक कैप्टन हॉकिंस केम इन जहांगीर कोर्ट फॉर दी टू गेट द फरमान, राइट. तो उनको पता है ना कि गिफ्ट क्या होता है, राइट. गिफ्ट देने से क्या होता है, सामने वाला खुश हो जाता है. सो ऑल्दो यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड द इंडियन सिविलाइजेशन और द European civilization and the New World civilization, they had not met before. They were able to come to certain rational understanding, and that is, that says to you that human beings, despite their despite their level of civilization or despite their level of literacy and development, technological development, they have द केपेबिलिटी टू बीइंग रैशनल. तो वही फादर एक्वावीवा ने क्या कहा, दैट नेचुरल लॉ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द इटर्नल लॉ. इटर्नल लॉ का मतलब क्या है? लॉ विच एग्जिस्ट सिंस टाइम इमेमोरियल. जब से टाइम स्टार्ट हुआ था, सर्टेन लॉज आर प्रेजेंट विच इनेबल्स human beings to exist peacefully, which enables human beings to exist peacefully. And participation of the eternal law in the rational creature becomes the natural law. Eternal law मैंने बता दिया, rational creature कौन हुए? हम हुए. Despite our civilizational growth, despite our literacy level, we are a rational creature just by the virtue of being humans. Then natural law can be said to be the law that is embedded in human nature.
इसका सोर्स बता रहा है। नेचुरल लॉ का सोर्स क्या है? ह्यूमन नेचर है। नेचुरल लॉ का सोर्स है ह्यूमन नेचर। ओके ओके, इट इज अ फैक्ट that human beings, regardless of the degree of the civilization reached, have distinguished between right and wrong actions. अभी just मैंने बताया that progress, despite our civilizational progress, we have this capability to distinguish between right and wrong actions. Okay, while natural law is universal, all human beings may not subscribe to its general principle in the same way. बहुत important ये point है, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये है that natural law is universal, मतलब हर जगह laws same है। When we are talking about natural laws, the law is universal, हर जगह same है, but उसका outcome, उसका क्या outcome may be different in different places. You never know how people subscribe. Okay okay, sorry. So how people subscribe to a set law, okay, set natural law. Yes, I can give you an example. Suppose natural law है, okay, of reciprocity. Human beings are reciprocal. आप किसी ने पूछा था यहाँ पर that अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, okay, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो क्या मैं गिफ्ट्स लेके और फेवर्स डिस्पेंस नहीं करूंगा? मैं किसी भी बिजनेसमैन से गिफ्ट ले लूंगा और फिर फेवर्स डिस्पेंस नहीं करूंगा? देन आई थिंक विवेक ने पूछा था। देन आई हैड टोल्ड हिम दैट ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज एज अ बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, योर नेचर इज ऑफ बीइंग रेसिप्रोकल. So being reciprocal can be said to be a natural law that all human beings are reciprocal in nature. Okay, लेकिन यहां देखो, नॉट रेशियल, कल्चरल बोल सकते हो, रेशियल नहीं बोलेंगे, कल्चरल बोल सकते हो, दैट विल बी द मोर पॉलिटिकल करेक्ट वे. ओके, सो डिफरेंट कल्चर्स रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लॉ और जो उसका आउटकम होता है वो डिफरेंट होगा. आई गो टू सम इंडियन हाउस होल्ड विथ अ गिफ्ट. आई गो टू सम इंडियन हाउस होल्ड, ओके, विथ अ गिफ्ट. ओके, सो हेयर इज द थिंग, अगर मैं इंडियन कल्चर में जाके किसी को गिफ्ट देता हूं तो दे विल गिव मी गिफ्ट लेके ट्वाइस द अमाउंट बैक. ओके, दे विल टेल मी दैट प्लीज यू स्टे हियर विथ अस, एंड यू नो इट इज अ मोर हॉस्पिटेबल कल्चर. उसी तरीके से अगर आप जाओगे मे बी एस्किमो कल्चर में, एंड देन यू विल गिव देम सम गिफ्ट, सो दे आर वेरी ऑब्लाइज्ड. दे विल शेयर देयर लिवर, जो डियर का लिवर होता है, एंटीलोप का लिवर होता है, बिकॉज दैट्स ऑल दे हैव, बट they will give you everything that they have. तो reciprocity का जो level है that is high, and reciprocal nature is a natural law, एक natural human tendency है. लेकिन अगर आप किसी दूसरे कल्चर में जाओगे, सपोज वेस्टर्न कल्चर विच इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, वहां पर भी नेचुरल लॉ काम करता है. बट इफ सपोज यू विल गिव देम गिफ्ट, सो दे विल से ओके थैंक यू मैन, एंड दे विल क्लोज द डोर. दे विल से थैंक यू एंड क्लोज द डोर. रेसिप्रोसिटी वहां पर भी हुई ना, थैंक यू तो उनके भी मुंह से निकला, थैंक यू उनके मुंह से निकला. दे माइट ऑफर यू सम स्वीट्स, दे माइट ऑफर यू सम वाटर because you gave them a gift. They might come back later and give you something, but level of response, okay, level of response in this reciprocity was different. अब समझ आया? उसी तरीके से कोई भी एक नेचुरल लॉ ले लो, तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट या लेवल ऑफ आउटकम विल डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. मैंने रेशियल क्यों मना किया? बिकॉज रेशियल पे अगर आप देखोगे तो स्टडीज नहीं है. देयर आर अ वेरी लेस स्टडीज, एंड दो स्टडीज अगर है तो दे आर हेविली बायस्ड. दे आर हेविली बायस्ड. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में, दैट देयर वाज दिस ग्रेट जिम्बाब्वेन सिविलाइजेशन. ओके, ग्रेट जिम्बाब्वेन सिविलाइजेशन. When the British, okay, when the British people, they went there and they saw the forts of the great Zimbabwean civilization. Do you know what they said? They said that these people, these black people, these Zimbabwean people, they are useless and they cannot make this great Zimbabwean civilization.
they are basically incapable of making these beautiful forts. That's why a white man came and made them, okay, made these forts for them and then left. तो ये चीज था. तो that's why I am not in favor of giving racial examples, because they tend to be heavily biased. Okay. वो था ना अभी जैंगो अनचेन्ड करके एक मूवी आपने देखा होगा, जैंगो अनचेन्ड. उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो, ही हैज प्लेड द रोल ऑफ अ स्लेव ओनर. तो उसमें वो दिखाता है कि हाँ, जैंगो अनचेन्ड जो था उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो हैड प्लेड द रोल ऑफ अ स्लेव ओनर एंड ही सेड दैट ब्लैक मैन, उसके जो ब्रेन होता है, ब्लैक मैन का जो ब्रेन होता है उसमें सर्विट्यूड, ओके, सर्विट्यूड का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है. दैट्स वाई दे डू नॉट रिबेल. दैट्स वाई द ब्लैक मैन डजंट रिबेल ऑन द atrocities. बट विद इन 20 minutes he was dead. Okay, he was dead. And he, a black man, Django जिसका नाम था, Django, he rebelled. Okay. So इस टाइप का जो रेशियली बायस्ड स्टडीज होता है, इसीलिए हम कल्चर पे ज्यादा बोलते हैं. ओके, हम क्या बोलते हैं, कल्चर पे ज्यादा बोलते हैं. ठीक है. A second quality of natural law is its immutability. What does this mean? Is that it does not change. It remains the same for human beings of all places and all time. सालों से चला आ जा रहा है. ओके, रेसिप्रोसिटी का मैंने एग्जांपल दिया आपको. आई जस्ट गेव यू द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना. तो रेसिप्रोसिटी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो रेसिप्रोसिटी है क्या? रेसिप्रोसिटी पहले से चला आ रहा है. इफ यू गाइज रिमेम्बर, हमने उसमें भी पढ़ा था इन आवर एनसीईआरटी दैट 5000 years बैक an Indus Valley, okay, an Indus Valley merchant had written that I have helped a Mesopotamian, okay, Mesopotamian merchant. So if you go to him, okay, if you go to him and show him this pendant, he is going to reciprocate on this matter. ओके, अगर आपको याद होगा 6th 7th की एनसीईआरटी थी. सो उसी तरीके से आज के डेट में भी, सालों से आज के डेट में भी नेचुरल लॉज चला आ रहा है. इफेक्ट ऑफ नेचुरल लॉज क्या होता है? सो नेचुरल लॉज नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट इज गुड, it also imposes a moral obligation to do good and avoid evil. आपको क्या करना है? एक आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है when you are following natural law, and that is to actively do good. To do good, actively do good and actively avoid doing evil. Okay. पॉजिटिव लॉज पे आ जाते हैं. नाउ हमने नेचुरल लॉ देख लिया. नेचुरल लॉ, आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज नेचुरल लॉ. तो अब जरा पॉजिटिव लॉ पे आ जाते हैं. देखो, नेचुरल लॉ के साथ एक दिक्कत, एंड दैट दिक्कत क्या है? व्हाट इज दैट दिक्कत? दैट दिस इज वेग. वेगनेस लेवल इज वेरी हाई एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली. इसी के लिए हमने पॉजिटिव लॉज बनाया. पॉजिटिव लॉज में क्या आ जाता है? दो चीजें मैंने बताई आपको, डिवाइन लॉज एंड ह्यूमन लॉज. और ह्यूमन लॉज इज व्हाट ड्राइव्स मॉडर्न नेशन स्टेट्स. सो पॉजिटिव लॉज आर ह्यूमन मेड लॉज दैट ऑब्लाइज और स्पेसिफाई एन एक्शन. लॉज क्या है? दे आर ह्यूमन मेड लॉज. ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. एंड इट ऑब्लाइजेस द पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी जहां पर वो लॉ, ओके, जो लॉ प्रेजेंट है. एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ पॉजिटिव लॉ? इट हैज अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री. इट इज नॉट, इट किल्स द वेगनेस. it kills the vagueness that is present in natural law. और प्रॉब्लम यहां पर क्या है? दैट नेचुरल लॉ इज हाईली वेग. ये आप हर जगह नहीं लगा सकते हो. बट पॉजिटिव लॉज विच हैज, एक चीज ध्यान में रखना कि पॉजिटिव लॉज का जो रूट है दैट इज इन नेचुरल लॉ ओनली. पॉजिटिव लॉ का जो रूट है दैट इज इन नेचुरल लॉ. बट पॉजिटिव लॉ डज व्हाट? इट मेक्स नेचुरल लॉज सिस्टमैटिक. इट makes natural law applicable to the general society. Okay.
Positive laws describes the establishment of specific rights for an individual. Rights बनाता है, बिल्कुल बनाता है, rights बनाता है, but also it puts limitations. It is going to put limitations. Okay. Then, if positive laws are based on natural law and often clarify natural law, clarification provide करता है. Clarification क्यों provide करना है? Can you tell me the reason why do we need to clarify natural laws? Because there is vagueness. Okay, there is vagueness. Okay, and there is an obligation to follow positive law. Why there is an obligation? What are the conditions where you get obligated to follow the positive laws? What are the conditions? तो conditions क्या है? सबसे पहले, if it is rooted, if the positive law is rooted in natural law, and the second is if they clarify, and clarify to do what? To end the vagueness, to end the vagueness. Okay, yes, to ensure order in society, correct. To prevent misinterpretation, yes, correct. That's a good example. Actually, misinterpretation wala is a good example that you have given. Obeying civil laws rests on the assumption that there is a lawful government with proper authority which has enacted the laws in a manner which is not contrary to natural law. बड़ा important point है, बहुत ध्यान से सुनना. एक assumption होता है whenever there is a law. Suppose there is a law that आप you will not urinate in public, you are not going to spit in public. तो ये assumption होता है लोगों का, by default assumption होता है. ये क्या होता है? This is a default assumption of people that this law has been formed by an authority. Okay, by an authority which has the right to do so, which has the right to do so. और अगर ये पता चलता है people को that the authority didn't have the right, okay, didn't have the right to enact this law, so there will be riots. There is going to be riots. So people has to accept the authority of the organization who is making these laws. Okay, ठीक है. So in terms of definition, the rules are quite similar to laws. Okay, I think there is a problem here. All right, ठीक है, एक मिनट, just give me 1 second. I think there is एक पेज मैंने skip कर दिया है. Yes, I have skipped a page. Okay. So what we can do here is that I'll just tell you about legality and morality, and मैं एक नया PDF बना के आपको अभी तुरंत भेज दूंगा, ठीक है? Okay. So अब हमने बात कर ली natural laws, and I think it is clear natural laws और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होती है. ठीक है, फिटीग नहीं है दोस्त. आई थिंक ड्यू टू चेंजिंग सीजन आई हैव जस्ट अ सोर थ्रोट. ओके, हम लोग बात करते हैं लीगैलिटी एंड मोरालिटी के बारे में. ओके, दिस इज अ पेज दैट आई बाय मिस्टेक आई हैव स्किप्ड, तो मैं एक नया PDF आपको भेज दूंगा. सो लीगैलिटी और मोरालिटी में क्या यू नो डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज होता है, लेट अस डिस्कस दैट. सो law and morality, they are what? Closely interconnected. They both are closely interconnected. Okay, but at the same time they do not merge with each other. Okay, दोनों इंटरकनेक्टेड है. लीगैलिटी और मोरालिटी जो है, समथिंग विच इज लीगल, ओके, it may or may not be moral, and something which is moral,
it may or may not be legal. Okay, सो ये चीज याद रखना कि दोनों क्लोजली वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ. The people who are at the helm and they are making laws, they try to make it as moral as possible. They try to make the laws as moral as possible, but often it is seen that something which is moral, it might not be legal, and something which is legal, it might not be moral. Example, महात्मा गांधी, है ना. महात्मा गांधी का अगर आप देखोगे करियर में तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने की है विच इज मॉरल बट नॉट लीगल. जैसे सिविल डिसोबीडियंस में. हाँ, दैट इज ट्रू. अरुणा शॉनबॉग केस में भी हमने डिस्कस किया था. अरुणा शॉनबॉग केस में भी हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इट वाज मॉरल टू लेट हर गो फ्रॉम हर मिजरी, to let her get released from her misery, but at the same time it was not legal. Euthanasia was not legal. ठीक है, ये भी एक चीज है. तो आप, अगर आपसे कोई पूछे, if someone asks you कि what is the relation between legality and morality, okay, what is the relations between legality and morality, so you can say this. Okay, so अब हम बात करते हैं दूसरे एक important point की, rules and regulations and how rules are different from laws. Okay, किसकी बात कर रहे हैं? So rules and regulation and how rules are different. Okay, so rules क्या है? The rules basically they are guidelines. The rules are guidelines that are provided to maintain what? Smooth functioning. Okay, rules are guidelines which are provided for smooth functioning. Okay, अब मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीजें बताई थी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉज? कैन एनीवन रिकलेक्ट? कैन एनीवन ऑफ यू रिकलेक्ट व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट रूल्स एंड लॉज? दोनों में डिफरेंस क्या है? You can choose to follow rules, but laws follow करना पड़ेगा. यस, करेक्ट. सो रूल्स जो है, okay, it is limited to maybe an organization, maybe to a sports, okay, maybe to a certain arena. Why rules are there? It is there to maintain peace and harmony in that domain. Okay, and that domain, but you can opt out. You can opt out of violating rules. You can opt out of the punishments for violating rules by saying कि मुझे तो खेलना ही नहीं है. Okay, yeah, I don't want to be part of this organization anymore. Suppose you are working in an organization. You are working in an organization and they say that you have to wear a black tie. अगर आप ब्लू टाई पहन के चले गए या पिंक टाई पहन के चले गए, ठीक है, सो आप ये आप पे they might say okay that okay this is the penalty, आपको दो दिन की सैलरी आपकी काटी जाएगी because you are not here in a black tie. But you can say that okay, I resign. I'll not be giving you my 2 days salary. Okay, you guys can take the salary and shove it up. But अगर मान लो लॉ है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया that every man will wear a black tie, तो आप ये नहीं बोल सकते हो गवर्नमेंट को shove it up. You are going to jail. Okay, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो रूल्स में there are certain rules which functions as law. तुर्कमेनिस्तान में there is a law that only white cars and white houses will be there. White marble houses and white cars will ply the streets. ऐसा कोई रूल है, ठीक है. So that has taken the shape of law. पहले रूल था that okay, the ruler of Turkmenistan, okay, he wanted कि रूल बनाया जाए ताकि एस्थेटिक लगे. सड़क पे सिर्फ व्हाइट कार्स जाएगी तो एस्थेटिक लगेगा. बट देन ही सेड आज से ये लॉ है. And now people who will not follow this law, they will go to jail. तो लॉ क्या हुआ? You cannot opt out of law, whereas you can opt out of rules. तो degree of enforceability is different. Okay,
Once a law is enacted, it stays for a long time and is needed to be followed by all citizens, but rules are often changed and altered. Okay, rules are often changed and altered. Law are differentiated from rules by the virtue of inevitable consequences. That is a very beautiful way of putting it, I think. Yes, the consequences of breaking laws are inevitable, whereas for this thing, rules, it is not. Okay, so rules are not that rigid, whereas laws are rigid. Okay, in terms of definition, rules might appear similar to laws, but as we have seen, okay, as we have seen that rules are flexible. तो rules क्या होता है, जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, ओके, आई लिव इन अ सोसाइटी, तो वहां पर है कि गेट नंबर 1 से कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, तो दीज आर रूल्स. अब फिर परसों उनका माइंड चेंज हो जाएगा, तो वो बोलेंगे कि गेट नंबर 2 से कोई बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, गेट नंबर 1 से जाएगी. फिर 3 दिन बाद उनका माइंड चेंज हो जाएगा, दे विल से कि नहीं, दोनों गेट से जा सकती है बड़ी गाड़ी. ओके, तो इस टाइप के रूल्स होते हैं. रूल्स होते हैं, जिम में जाते हो तो ओके, स्टैकिंग योर वेट इज अ रूल. Stacking your weights back after using them is a rule of the gym. Why? For smooth functioning. For the smooth functioning. But you can say that, okay, I am not going to rack the weights back. I am going to leave the gym. I am not going to rack the weights back. But suppose racking your weight is a law. Racking your weights is a law. So you cannot say that I am leaving the gym, because since it is a law, so up you are liable to be punished, and you cannot escape the consequences when it comes to laws, whereas you can escape the consequences by excusing yourself from that domain when it comes to rules. Okay, so rules are less formal set of guidelines which has little or no consequences depending on the person that is enforcing them. Okay, that is enforcing them. So person पे भी depend करता है. Suppose आपके boss हैं, you are an IS officer, आप SDM हैं, ठीक है, और there is a rule that all the SDMs, DM ने बनाया है rule that all the SDMs are going to report to him. तो ये लॉ तो है नहीं दैट यू आर गोइंग टू, ओके, आपको आप एस्केप नहीं कर पाओगे, ये रूल है. तो लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, मे बी द डीएम फॉर वायलेटिंग दिस रूल ऑफ नॉट मीटिंग हिम इन हिज ऑफिस, ओके, बाय नॉट मीटिंग हिम इन हिज ऑफिस, आपको डांट लगा सकता है, आपको सेंसर कर सकता है, आपका डोमेन छीन सकता है. बट ही कैन ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, यहां देखो, दैट इज इन्फोर्सिंग, ही कैन ऑल्सो सस्पेंड यू, he can suspend you as well if he has the power. So it all depends on the person who is enforcing the rule. But law में क्या रहता है, there is only one entity. Rules can be made by multiple entities, whereas laws can be made by only one entity, and that is the state. अगर कोई और एंटिटी लॉ बनाएगा तो देयर विल बी chaos, there is going to be confusion, there is going to be riots. Why? Because people are not going to accept the legitimacy of any parallel law making body. Yes, laws can also be changed. यहाँ पर लिखा हुआ है it stays for a long time. यहाँ देखो थोड़ा, जस्ट लुक एट दिस, इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ मैंने ये नहीं ना लिखा है कि परमानेंट है लॉ. लॉ परमानेंट है, लेकिन लॉ चेंज करने में समय लगता है. अगर आप देखोगे तो 20-20 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के बाद लॉस चेंज होता है. रूल्स हर 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 4 घंटे में चेंज हो सकता है. ओके, ठीक है. रेगुलेशंस पे आ जाते हैं. सो रेगुलेशंस है क्या? सो इट इज बेसिकली द रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी. अगर कोई अथॉरिटी है और वो रूल को इन्फोर्स कर रहा है, कोई एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, कोई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो कर रहा है. तो रेगुलेशंस का मैंने एग्जांपल दिया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, ये है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एंड बोर्ड. व्हाट इज द फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. यस. आरबीआई का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना. आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड और क्या होता है? नबार्ड है, नबार्ड इज ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडी, है ना. सेबी, नबार्ड, सीसीआई, आरबीआई, ये सब है क्या? दीज आर अथॉरिटी विच हैव अ फोर्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. सो रेगुलेशन और रूल में डिफरेंस क्या है?
जो अप्लाइंग अथॉरिटी है, इट हैज ग्रेटर फोर्स। रूल्स और रेगुलेशंस में ये डिफरेंस है कि रेगुलेशंस का जो एप्लीकेशन वाला अथॉरिटी है, इट हैज द ग्रेटर फोर्स। मे बी अ हैंड ऑफ लॉ इज बिहाइंड इट, is behind the authority which is enforcing the regulation. ठीक है? It helps clarify law and and its source is any authority which has the backing of law. क्या करता है रेगुलेशन? क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ में हेल्प करता है। रेगुलेशन इट हेल्प्स, ओके, इट हेल्प्स clarify any law. It keeps you on your toes on a daily basis. It keeps you on the toes on the daily basis. Law is something which you comply on a long term basis. Regulation is the something which you comply on a day to day basis. समझ आ रहा है? Have you got this difference? Regulation is something which you comply on a day to day basis, whereas law is something which you comply on a long term basis. इसमें डिफरेंस समझ आया या किसी को डाउट है? पूछो। रेगुलेशन क्या है? डे टू डे। यस, करेक्ट, जीएस इज करेक्ट, ओके। हाँ, रेगुलेशंस क्या है? डे टू डे बेसिस पे जो आप करते हैं, और वो हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में लॉ को अधेयर करने में, ओके। एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्फोर्सिंग द रेगुलेशंस, इट हैज द बैकिंग, जनरली इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ टू मेक इट बेटर इन्फोर्सेबल, ओके। On the basis of extent, a regulation may bind a person wherever she goes. जहां पर भी आप जाओगे, ओके, आपको बाइंड करता है। जैसे आप एक स्टॉक ट्रेडर हो, तो सेबी के रेगुलेशंस आपको बाइंड करेंगे। आप एक बैंक है, तो आरबीआई के रेगुलेशन, जहां पर भी आप ऑपरेट करोगे, आरबीआई के रेगुलेशंस आपको बाइंड करेंगे। दे आर यूजुअली मेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लॉज। एक और फीचर क्या है? क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉज, okay, and it helps in establishing the supremacy of law in on a long term basis. Any doubt that you might have? The course content is over for these three things. Any doubt? Now I'll take your doubts. Any doubt that you might have, friends? Father Aquinas is a ethical theorist, okay. He's basically a padri, एक तरीके से पादरी होता है ना, वो क्लेरिक। he is a Christian cleric, okay, clergyman थे, ठीक है। So he was famous for his ethical theories. All right. I was reading about Diogenes. I was reading about Diogenes yesterday. So I'll tell you something about him. Diogenes हमने discuss किया था Diogenes के बारे में, but at the same time उसके life के बारे में. So Diogenes was very famous for living a life away from the society. So वो क्या करता था? That once he was shifting through, उसको क्या बोलोगे? कचड़े को क्या बोलोगे? नॉट एग्जैक्टली कचड़ा, बट ट्रैश, ओके। ही वाज शिफ्टिंग थ्रू द ट्रैश। तो डायोजेनस वाज अ वेरी फेमस, ओके, डायोजेनस वाज अ वेरी फेमस philosopher. He was a very famous ethical thinker, and but he was a very rogue element, okay. He was not a very conformist person. So he used to live between dogs, and he did not had a home. और वो क्या करता था? एक बड़े से शेड टाइप का था, डॉग्स के साथ, 15-20 कुत्तों के साथ रहता था। सो डायोजेनस, ही वाज शिफ्टिंग थ्रू ट्रैश, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट अप्रोच्ड हिम। Alexander the Great approached him and he said, "Oh dear, great Diogenes, my dear, what you are doing? Why you are shifting through the trash?" And Diogenes replied that I am finding the bones of your great father, but I cannot make which bone is of his slave and which bone is of your great father. So, and he used to heckle other philosophers, and he used to go into their their assembly, and he used to say that your opinion is shit. And okay, and then somebody pointed out that Diogenes, you live between dogs.
so you are a dog. So Diogenes said to that person, okay, I am a dog, so don't complain when I'm going to bite you. So he was, the real shit poster, jaise abhi bola is. And I read about him yesterday. And I thought that it was nice to share this with you, because we read about Diogenes in our moral philosophy class. So friends, that's it for today. Okay. Bhaiya, Man-made laws. just a